Hello. My name is Aishwarya Swarup. Welcome to Unacademy Grow. This is one of the first sessions to understanding data analytics. So basically, we will be trying to define what it is. We will also be trying to define what it does. And then we will also try to define what data is. So ये कुछ चीज़ें आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे. And if you have any questions, you can put it in the comments. We will also have live sessions every now and then where we will be looking at real-time data sets. I will also be mentioning कि आप data sets पे काम करने के लिए कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से आप उनको download कर सकते हैं, and then we can work together. But anyway, that is something that we will be doing later on. आज हम करने वाले हैं start अपनी understanding develop करना towards data analytics. So, what is data analysis? Simple data को analyze करना. Data को analyze करने का क्या मतलब होता है? मतलब इस तरीके से हर चीज़ simple हो गई. Data को analyze करने का मतलब है कि एक बड़ी data set में से हमें ये समझना, ये पता करने की कोशिश करना कि इसमें पैटर्न्स, इसका क्रक्स क्या हो सकता है. अगर let's say there is a mathematical equation, and if you look at that mathematical equation, you will try to solve that mathematical equation, and it will lead to probably one number or a variable, a set of numbers, which will tell you something about that equation, right? That is something, that is a good parallel of data analysis. It's not data analysis, but ये अच्छा parallel है ये समझाने के लिए data analysis इसका ही एक बड़ा रूप है, ऐसा ही कुछ होता है. Exactly क्या होता है? आपके पास बहुत बड़े data sets होते हैं. Basically आपके पास एक system होता है. उस system में अलग-अलग तरीके से track करी जाती हैं चीज़ें. वो जो चीज़ें, जो डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है जो ट्रैक होती है, उसको एक साथ कंपाइल किया जाता है इन डिफरेंट सेट्स, इन डिफरेंट टेबल्स. वो टेबल्स आती हैं आपके पास एज अ डेटा एनालिस्ट. एंड इफ लेट्स से यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू हैव टू मेक डिसीजंस, अगर आपको डिसीजंस लेने हैं या आपके मैनेजर को, आपके मोस्टली डेटा एनालिस्ट इज अ सपोर्ट फंक्शन टू अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन, which is why it is a very important function. ये support function थोड़ा सा भी weak नहीं हो सकता है. The understanding has to be, the analysis strength has to be high, because support function that is aiding a decision making function is important, because decision makers आपके ऊपर depend करते हैं. और कुछ भी flawed analysis अगर हुई, then it obviously comes back to, okay, is the data correct? Is the analysis correct? Is the analyst a skilled one? Hence, we need to be skilled. We need to have skilled data analysts. Now, जब ये बड़े sets जो कि हमें एक system के बारे में बहुत सारी information बताते हैं, हमारे पास आते हैं, we evaluate as data analyst. The data analyst would evaluate that data and try to see what decisions or what that evaluation will lead to. वो evaluation से हम क्या कर सकते हैं? हम उस चीज़ को समझ के, उसको तोड़ मरोड़ के, उसका crux निकाल के, वो crux जो आ रहा है उसका हम क्या करेंगे? How is that crux? How is that summary? How is that input or output of your data set become an input to a decision maker, right? That is what data analysis does. Data analysis exactly क्या होता है? Basically, data एक दूसरे को इफेक्ट के बॉदर कैसे करता है, डेटा आपके बिजनेस को बॉदर कैसे करता है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस लाइज अंडर द हेडर ऑफ डेटा एनालिसिस. So that's what you will be doing as a data analyst. You will be looking at big chunks of data. Nothing to be scared of. You will be looking at big chunks of data, big sets of data that will help someone, you or someone in your organization, in your team, in your system, in your function, to take better decisions. Anything that can tell you about a pattern always helps you
take better decisions. Those patterns can be broken, या ये हो सकता है कि वो पैटर्न सही हो या गलत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पैटर्न सही था पहले बट अभी सही नहीं है. सही गलत की बात हम नहीं करते हैं, बट या वैलिड इनवैलिड बोलते हैं उसको, दैट इज अ बेटर टर्म. वैलिड है अभी वैलिड नहीं है, या अभी भी वैलिड है, वॉट एवर इट इज. देयर कैन बी मल्टीपल इन्फेरेंसेस, बहुत सारे इन्फेरेंस आप निकालेंगे, आप जो डेटा देखेंगे उसमें से. ये इन्फेरेंसेस कैसे हेल्प करते हैं एक डिसीजन मेकर को, that will be your experience around data analysis and business analysis. And ये experience leads to a lot of personal growth in career as well, because then you understand कि okay decisions लिए कैसे जाने. You getting it? So that's probably not probably, that's the crux of data analysis and its input towards a system of decision makers. The next thing is, what are the aspects of data analysis? So data analysis के broadly 4 सब parts होते हैं analysis करने के. This is something that we will be doing practically on probably live sessions. I hope live sessions इसके हम कर पाएं later. Inspecting the data, cleaning the data, transforming it and modeling it. आपको इंस्पेक्ट करना है कि डेटा अप्रोप्रिएट है, एप्ट है या नहीं है. इसका मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी चाहिए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, फर्स्टली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग टू आंसर. वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग टू आंसर, you also have to look at if your data is capable of answering that question. Obviously this is a skill to even understand कि अच्छा ठीक है आपका डेटा ये क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दे भी पा रहा है या नहीं, इज ऑल्सो अ स्किल. ये आएगी ऑब्वियसली प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद भी. एंड इट इज़ इनएविटेबल. मेकिंग मिस्टेक्स while working with data is something that everyone should be comfortable with. कि 4-5 बार तो डेटा शीट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ वो बंद होगी, वो डिस्कार्ड होगी, वो फिर से खोली जाएगी. ये उम्मीद करनी चाहिए, गलतियाँ करने की उम्मीद एज अ डेटा एनालिस्ट आपको करनी चाहिए. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन टू पीपल. वंस यू इंस्पेक्ट दैट डेटा, यू क्लीन इट, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा लेट्स से न्यूमेरिक आपका एक कॉलम है, वहाँ पे एनी है, कोई डेटा सेट फिल्ड नहीं है, उन रोज को हटाना, उसकी क्लीनिंग करना, रिडंडेंट रोज को हटाना, या फिर कुछ फ्लॉड डेटा है तो उसको हटाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग. Then there is transformation of data. Transformation is, it's a very subjective word here. Transformation is basically making the data from let's say raw data set to workable data set. And then workable data set से हम model कैसे करते हैं data so that it actually starts speaking for itself, right? These are the 4 aspects of data analysis broken down into very simple language. This is much more technical. टेक्निकल का मतलब ये नहीं कि वो समझ में आना डिफिकल्ट है. टेक्निकल का मतलब ये है कि थोड़ा सा समय लगता है उसके हर एक स्टेप में. देयर आर डिफरेंट मेथड्स, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड्स. दैट्स इट. आफ्टर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज डेटा एनालिसिस इम्पोर्टेंट. तो जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं उसका जो भी क्रक्स आता है वो क्रक्स हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग की तरफ, जो हमने अभी बात की, राइट? नॉट जस्ट क्रूशियल डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो डे टू डे डिसीजन मेकिंग. अगर कोई हाइपोथेसिस है एक बिजनेस की, एक फंक्शन की, एक टीम की, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना कि वो सही है या गलत है, वो डेटा एनालिसिस करता है. तो कई बार क्या होता है कि let's say I am a company, I am a social media, not even social media, I am a digital marketing company, और मुझे डिसाइड करना है कि मैं एक नया, मेरे पास एक मेरे पास एक फूड ब्रांड आया है केलॉग्स जैसा, और मुझे उसे बेचना है, मुझे उसको मार्केट करना है लोगों को. तो मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँ, उसके लिए हमें एक एनालिसिस, एक
स्टडी करनी होती है। वहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं होता है, लेकिन हमें स्टडी करनी होती है। हमारे पास पुराना जो डेटा होगा उसको यूज़ करके, पुराना एज इन कॉम्पिटिशन का या फिर केस स्टडीज अगर हो गई, कुछ डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अंडरस्टैंडिंग दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, बट आई एम जस्ट गिविंग दैट कॉन्टेक्स्ट टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। उस तरह की स्टडी करके, एनालिसिस करके, उसको समझ के हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉबली इंस्टाग्राम पे जाना है, हमें प्रॉबली यूट्यूब पे जाना है, हमें लिंक्डइन पे नहीं जाना है, हमें ट्विटर पे बात ही नहीं करनी है, बिकॉज वहाँ पे लोग मेरे ब्रांड से कैसे रिलेट करेंगे मुझे नहीं पता। आई प्रॉबली आई हैव नॉट फिगर्ड इट आउट, राइट? सो ऑल ऑफ दीज डिसीजंस दैट आर टेकन, they are based on hypothesis, they are based on past experiences, they are based on research that you have done on other similar brands, or they are based on research that you have done on similar industry. But once you take these decisions, you implement the decisions, you will see that let's say 2 महीना आपको हो गया अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के बाद, आपने कुछ डेटा देखा, उस डेटा में आपको कुछ पैटर्न दिख रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि प्रॉबेबली यूट्यूब से बेटर होता कि आप थ्रेड्स पे चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे एंगेजमेंट करने की कोशिश करें। दिस इज अ सुपर हाइपोथेटिकल एग्जांपल बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैपन, दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। सो if you see those, I mean, how do you get to even know that ऐसे कुछ behaviors आ रहे हैं आपके consumers में, जहाँ पे वो probably Reddit से आ रहे हैं या फिर Reddit पे जा रहे हैं देखने, और there are other social media apps where they are going. There's Facebook, which is let's say a big part of traffic chunk, and you are not advertising on Facebook, right? So how do you get to know it? This is it. The data that you collect over a period of time for any kind of business, any kind of system, any kind of office, any types of consumers, any type of services, any types of products is it's why you. So that is why data analysis is important. Data analysis is basically the input function to very, very crucial business decision making functions of any organization or any system, right? Which is also why there is a lot of demand of data analysts. Then we will try to understand the next thing, the types of data that are available. हमारे पास किस किस तरीके के डेटा हैं? हमारे पास the fad, the big word, the big data. Big data के बारे में I am hoping, I am assuming almost सबने ही सुन के रखा होगा किसी ना किसी कैपेसिटी में, किसी न किसी प्रॉब्ली चैप्टर में, काफ़ी लोगों से at a certain point in time big data was the thing. People were talking all the time about big data and nobody understood what it was, but it's a very simple thing. जो नाम है वही है, big data is big data, and it means that इस डेटा को एक बार में ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करके इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं, as simple as that. Or big, by the word, the size big, is it size big, or is there another type of aspect which makes it differently big? वो 3 चीज़ें, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके बिगनेस को एट्रीब्यूट करती हैं. फर्स्ट थिंग इज वॉल्यूम, विच इज़ बहुत बड़ा डेटा है. सेकेंड थिंग इज वेलोसिटी, विच मीन्स बहुत जल्दी उसमें डेटा सेट्स ऐड हो रहे हैं. एंड थर्ड इज वेराइटी, मतलब बहुत तरीके की डेटा सेट्स हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. Let's say there is let's say it's 12 and it has been announced that at 12:05 a particular concert's tickets will be opened for booking, right? And वो period सिर्फ 1 घंटे के लिए खुला रहेगा, 12:05 to 1:05. okay, तो अभी लोग क्या करेंगे? ये अनाउंस अगर पहले से करके रखा हुआ है तो सारे के सारे लोग आएंगे, 12 बजे वो वेबसाइट पे बैठ जाएंगे. 12:02, 12:03, 12:04, 12:05 पे the website will start collecting a lot of data, of all the people, thousands and thousands and lakhs of people that will come to that website.
they will start putting in their data, they will start booking the tickets, there will be a lot of entries. तो अभी वॉल्यूम नहीं बना है बट अभी वेलोसिटी बन गई है. मतलब एक सेकेंड के अंदर अगर आपके पास 500-600 एंट्रीज आ रही हैं, विच मीन्स द वेलोसिटी इज वेरी हाई. एंड टू इवेल्युएट एनी डेटा सेट वेयर द वेलोसिटी ऑफ data entering the data set, the table is high, that's big data. Now इसी example में the person, the consumer, the fan or the person who wants to go to the concert, वो अपना details डाल रहा है या डाल रही है. तो वो जो भी डाल रहे हैं वहाँ पे they will put in their email IDs, their phone numbers, their names, probably addresses भी, city names, so on and so forth. That will be variety. If let's say there are multiple more types of data types that need entering the data set, the variety comes in there. So that is how big data becomes big data, because of variety. Now if let's say already 2 lakh people have booked the tickets in the first hour, and you need more, I mean there are 50,000 more tickets that have been released in a different venue, and you're opening the website for let's say half an hour more, then again the velocity will increase, the variety will increase, and the volume will also increase. Now if you have to work on such a data set where constantly more data is getting added, and जो data का जो वेराइटी है, द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो है वो भी मल्टीपल तरीके के हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स, बिग नंबर्स, स्मॉल नंबर्स, व्हाटएवर दे आर, रैशनल, इरैशनल. That data becomes very difficult to evaluate using traditional methods. आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा ठीक है मुझे अभी 1 घंटे के अंदर और लगा के 1 घंटा मुझे रिपोर्ट भी देनी है. That is sort of difficult until and unless you are a data analyst who is experienced, at least. By experienced, I mean you simply understand data analysis and you know how to work around with big chunks of data. That is when you'll be able to give out a report. Otherwise, it's difficult to work with such a data. So that kind of data is called big data. We'll go to the next type of data, that is called metadata. Metadata क्या होता है? Metadata हमें हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. यानी कि हमारे पास जो डेटा एग्जिस्ट करता है, लेट्स से कोई और डेटा सेट उसका साइज बता रहा है, उसका टाइप बता रहा है, उसमें बता रहा है कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं, वो इमेजेस का साइज क्या है, so on and so forth. That will be metadata. मेटाडेटा आपने बहुत ज़्यादा probably सुना होगा, हो सकता है सुना हो, देखा हो with websites. It is available when you right click a file, you go to properties, you look at a lot of information. That is also metadata. Meta information, when you are in friend circles and you are laughing and एक जोक के ऊपर एक और छोटा जोक होता है जो कि इंटरनल जोक के ऊपर और इंटरनल एक जोक होता है. मतलब आप बहुत फाइन पर्सपेक्टिव में आप देखने लगते हैं हर चीज़ को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने लगते हैं, समझने लगते हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं चीज़ें with respect to circles and with respect to conversations and with respect to understanding of data. That data is called metadata. We will go to the next one, which is real-time data. Real-time data is, let's say, if this session was a live session, which means ये constantly upload stream हो रहा होता YouTube पे, then it would have been a real-time data collection exercise that would have been going on in the background. So real-time data, again अगर हम वो concert वाला example ही लेते हैं, उस example में जो भी velocity के साथ जो data आ रहा था, that was real-time data. Then we will go to machine data. Machine data is something that has no human interference and is completely, totally given by the machine. It's a report, it's a data set that is given by the machine. So let's say if there is a translator, let's say you are getting into a Google meeting, if you're getting into any meeting, okay, or if during this session मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट करने वाला एक ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होता, तो आफ्टर द सेशन वो मैंने जो कुछ भी बोला है उसको ट्रांसक्रिप्ट में डाल के
वो जितने भी लोग इसको रिसीव करना चाहते हैं उनको वो भेज देता। बट उसमें मेरा इंटरफेरेंस, मेरा इनपुट कुछ नहीं होता, मैं कुछ चेंज नहीं करती, एवरीथिंग वुड हैव बीन डन बाय द मशीन, hence that data becomes machine data. So these are the different types of data. I hope इस सेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके की चीज़ें करेंगे, किस तरीके का डेटा देखेंगे, डेटा एनालिसिस, और उससे भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें तो हम फिर भी समझ जाएंगे आने के मतलब आगे के सेशंस में. I hope you understand what data analysis is and how data analysis helps other functions and businesses. Obviously इसकी deeper understanding काम के साथ आएगी, समझने के साथ आएगी, with more lessons and sessions. But I hope the first goal is sorted, which is basically understanding data analysis. See you soon. Bye.